amount of time just to get the output. Okay, so let me tell you with an example, what is an algorithm? Suppose I say this is my problem to add two numbers. My algorithm, and most importantly, algorithm should not be code specific. It should be in simple language. Okay. Simple English. Simple English means it should be understandable by any person. Okay. Irrespective of their knowledge of coding. So when I say add two numbers, what will be the steps? Firstly, when I say add two numbers, there should be two numbers. So I will read. Firstly, I'll say input two numbers. Okay, when I say input two numbers, that means I have my input. See, people are still joining and like it's really difficult to continue this way. So I request you people to please join within 5 minutes. Okay, after the starting of the class. Next, when I have two inputs, two numbers, what will I do? I will read them. Read two numbers. Okay, maybe in some variable. In two variables. Okay, I will tell you what is it, or for time being, you can just omit this. Okay, read two numbers. Now, once I have inputted two numbers, the next step will be add the numbers. Maybe in C, I will add A plus B. Okay. Maybe I'll take the two numbers in variable A and variable B. These are just maybe I want to add 2 and B equal to 5. Okay. I'll add those two numbers in A and B. Then in C, what will I do? I'll add the numbers. Next, I have my result in C now. I'll say display C. Okay. So when I say this, just assuming that you people don't have any knowledge of any C programming, C++, Java, anything, what can you make out from these lines, these 4 lines? Addition is going on. That you have to take two numbers, read those two numbers into certain things called as variables in A and B. Then you store the result as C and you get the addition of two numbers in C. Then what you do? Final step, display C. Okay. This is simple plain English. You have two numbers, you have an output, you have two inputs to output, and these are the sequence of steps. Okay, this is how you write an algorithm. Is it clear? Yeah, ma'am. Clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. If there's any problem, please let me know. Okay. If anything you have doubts or anything, or the board is not clear, not audible, anything. Suraj, is there a problem? Suraj? No, ma'am, no. You're not supposed to send smileys in this meeting, okay? Let me write another algorithm.
find largest of three numbers. So we'll just write it as start. Then we'll take three numbers in A, B, and C. Okay. After you put A, B, and C, you have to read those numbers. Now you're ready with three numbers. Next, what will you do? How will you compare three numbers? Firstly, you start. Okay. I'll tell you what it will do. Is the board visible? Still visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, don't write too much down. It's not visible. What? Yes, ma'am. This Ma'am, last don't Ma'am, the write below part of down. the board is not visible. Yes, ma'am. end of the board. It's not visible. Okay. It's better This that you is should write at the else. start of the board. I'm telling you what is it. Last line is else. Display C is largest. Okay. Is this part visible? Yes, Yeah. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What? Is there a lag again? No, ma'am. No, ma'am. There is no lagging, ma'am. Now see. I have to find the largest of three numbers. Okay. I took three numbers, A, B, and C. Maybe I took 2, 3, 4. This is A, B, and C. Okay. Till here, is it okay? I took 2, 3, and 4 as input. Now come here. If A greater than B, that means what will I check? 2 greater than 3. A and B is 2 greater than 3. If this is the condition, if something is there, until and unless this is true, it will not enter here. Okay. It is not going whatever is here. Okay. So when I say is 2 greater than 3? No. Then where will it go? It will not come here. It will go to else part. Okay. What will I check here? If B greater than C. What was B? 3 greater than 4. Is it true? No. 3 not greater than 4. It will not go here. It will look for else part. Display C. That means what did it display? 4. Fine. Clear? Yes, ma'am. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Any doubts? No, ma'am. Rishu. Rishu, is the screen visible? सूरज आपको समझ में आया? सूरज? Yes, ma'am. सूरज आपको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
हिंदी में बताना होगा। सी देखो, जब मैंने ए को 4 लिया, बी को 3 लिया, सी को 10 लिया, देखने से हमें पता चलता है 10 इज द लार्जेस्ट नंबर। अकॉर्डिंग टू दिस हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ जब ये कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम इस पार्ट में आएंगे, अगर इस पार्ट में नहीं आते, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम इसके अकॉर्डिंग एल्स ढूंढेंगे, एल्स। ठीक है, यही मेन कॉन्सेप्ट है। Rishu, can you see the screen? Rishu, are you there? Ma'am, I think Rishu must be having a network issue. Okay, he has complained that the screen is not visible to him. बाकी सबको screen दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, जब मैंने 4 लिया, तो फर्स्ट लाइन क्या है, if a greater than b, यानी कि मुझे कंपेयर करना है a का वैल्यू 4 ग्रेटर देन 3, ये वाला कंपैरिजन करना है, a ग्रेटर देन b, 4 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 3, तो हम कहाँ जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता, अगर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 होता तो हम एल्स का पार्ट जाते, लेकिन अभी हमें ये वाला कंपैरिजन देखना है, ये ट्रू है तो हम इस पॉइंट में आ जाएंगे। फिर क्या है इस पॉइंट में, फर्स्ट लाइन क्या है, ये है इफ a greater than c, a was 4 greater than c 10, okay, is this true? No, 4 is not greater than 10, तो इस पॉइंट में नहीं आएंगे, दिस कंडीशन वाज फॉल्स, तो इस लाइन पे नहीं जाके हम कहाँ जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग एल्स देखेंगे। जब एल्स देखेंगे तो क्या है, एल्स के बाद डिस्प्ले c इज लार्जेस्ट, यानी कि c 10 यहाँ पे लार्जेस्ट डिस्प्ले हो जाएगा। फाइन, यहाँ तक क्लियर है? तो इस पॉइंट में क्या हुआ, हमें यहाँ पे ही लार्जेस्ट मिल गया। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब ऐसे ही अगर आपको कुछ एल्गोरिथम दिया जाए टू फाइंड मे बी स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, आप कर सकते हो। ऐसे सिंपल प्लेन इंग्लिश में आपको लिखना है कि क्या आपको प्रोसीजर करना है। ठीक है, आपको लार्जेस्ट का फंडा पता होना चाहिए कि कैसे आपको लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है, देन यू विल सी हाउ टू गेट द लार्जेस्ट। थोड़ा आप सोचोगे कि कैसे आप लार्जेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, ऐसे ड्राई रन करके कौन से टेक्निक से आपको लार्जेस्ट मिलना है उसको आप लिख दोगे सिंपल इंग्लिश में। ठीक है, वो एल्गोरिथम हो गया। इज इट फाइन? Yes, ma'am. विदाउट Yes, ma'am. एनी डाउट्स? कोई भी डाउट्स हो तो नेक्स्ट we will start with flowchart. Okay, algorithm is clear. ये सब just beginning of your coding है। पहले आपके पास algorithm होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए flow chart में कैसे काम कर रहा है, then you can start coding. So these are just the basics or prerequisites of your coding classes. Flow chart, it gives you the flow of an algorithm. Okay, it tells you the direction of the steps the algorithm follows. Fine. So there are certain symbols. क्या आप ये सब नोट कर रहे हैं? क्या आप नोट कर Yes, रहे हैं? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, भाई इधर भी पार्ट कर देना। क्या Yes, ma'am. क्या बोल रहे हो, मुझे आवाज नहीं आई आपकी। क्या बोल रहे हो?
मैम बीच बीच में आप स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा था मैम, इसलिए नहीं उतार पाए पूरा। जब ऐसा होगा तो देयर इज अ लैग इन योर नेटवर्क मे बी और इन माय नेटवर्क, आई डोंट नो, सो प्लीज स्टॉप मी देयर, ओके। अगर आपको स्क्रीन Okay, विजिबल नहीं हो रहा है कोई भी टाइम पीरियड पे, तो आप मुझे स्टॉप करके मैं रुक जाऊंगी वहीं पर। ओके मैम। So there are certain symbols which can be used in a flowchart, which are to be used in a flowchart. Okay, these symbols are fixed. आप अगर किसी को आप आज आप क्लास में फ्लो चार्ट सीख रहे हो, आप अगर नेक्स्ट टाइम ये सिंबल बना के आप मुझे कुछ दिखाओगे तो आई शुड बी अवेयर कि ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आपको ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब फिक्स सिंबल्स है, स्टैंडर्ड सिंबल। कोई कुछ बोल रहा है? किसी को डाउट्स है? यस अमीशा, आर यू टॉकिंग? No, ma'am. कोई डाउट्स होगा तो बता। Okay, ma'am. Okay, let's start with the first one. This is just a unidirectional arrow which gives you the flow line. Okay, flow line means it can be this way, anything. Okay, it's not necessarily this way, it can be this way, anything, any direction. Okay, then you have this. This is terminal. Terminal means start or stop. Okay, when I wrote the algorithm, I started with first step is start, last step is stop. So in that case, you will use this terminal. Mind you, these are two parallel lines with rounded corners. Okay, rounded corners. Then this is for input or output. Okay. जब मैं read 2 numbers करूंगी या read 3 numbers करूंगी, I will use this kind of representation. Fine. यहाँ तक आपने नोट कर लिया? यस मैम। Yes. कितने की नोट कर लिया? Yes, ma'am. सबने नोट कर लिया? This is for processing. Processing means just normal square brackets or rectangle brackets, anything. Rectangles. Okay, not this type, not parallelogram type. It is just simple rectangle or square. Processing means you will add, maybe you will give this way. Okay, so whatever processing you are doing, you will do it here. Fine. Next. People are still joining. This is for decision. This kind of symbol is for decision. Like in previous case, I used if A greater than B. What I was doing, I was trying to evaluate, is A greater than B? There was a decision to be followed, yes or no. So I will put that in this type of representation. Fine. There are a few more symbols, like you have your just a simple round. This is on page connector. Okay. When this is used, suppose you have your flow chart. This is your last step. Now you have to move. Maybe you'll draw a line here. You can continue here. How? You'll just put the symbol. It is on the same page, so you'll use on page connector. Okay. And if you have to turn the page, then it will be, is this line visible? I don't think so. No, ma'am. नो मैम। ये हो गया था प्रोसेसिंग वाला.
Yes, ma'am. Okay. So when I say off-page connector, it is this way. This is off-page connector. Okay. If you have to move to another page to continue with the flow chart, you will use this symbol. Okay. These two symbols are hardly used, but just be aware of these symbols. Okay. Ma'am, what is the use of on-page connector, ma'am? On-page connector. Okay, I will tell you. Suppose आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया, आपका यहाँ तक आ गया, आपका एंड ऑफ पेज रीच हो गया, लेकिन आपका फ्लो चार्ट यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, आपके पास राइट साइड में स्पेस है, व्हाट यू डू, आप ये कनेक्टर दे करके यहाँ पे कनेक्टर दोगे, फिर जहां से आप कंटिन्यू करोगे, सपोज यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँ तो ये कनेक्टर वापस से यहाँ से दे करके मे बी सपोज आई विल यूज, फाइन, ठीक है? ओके मैम। ये सब नोट कर लिया आपने, एवरीबॉडी? यस मैम। Yes, ma'am. ओके. See, we wrote the algorithm for adding two numbers. Now we'll draw the flow chart for, say, adding two numbers. Okay. I will draw it for adding two numbers. You will draw it for finding the largest of three numbers. Firstly, what was it? Start. Terminal. Fine. Is it okay? Yes ma'am। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then this is the flow line. This is the flow line. Then Yes, what was ma'am. next? Yes, ma'am. Input. A, B. Now, this was the input. The input box was this. Yes, ma'am. Input. Then I have my again a flow line. What is the flow line now? Processing. Maybe some. Process. This was the processing or calculation, anything? Yes, ma'am. Next. What was next? Output. Display. Sum. In what kind of brackets, what kind of representation it should be? Decision. Input, output. Output. Fine. Then you are done with your problem. Stop. Is it clear? This is stop here. Okay. Now since I don't think so, this is visible here. Display sum. It is not visible. Not Yes, visible. ma'am, not visible. Okay. See. Now I am telling you the use of on-page connector. It was not visible. So I use this connector, on-page connector. Okay. Okay. ठीक है. Now is it visible? Yes ma'am। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तक clear है सबको? You saw the usage of on-page connector? Yes? Yes, ma'am. ma'am. Yes, Okay. ma'am. Now can you draw it for the flow chart for finding the largest of three numbers? Yes, ma'am. I'll give you 2 minutes.
Try to work it out. I'll draw it here. You will tell me what to draw. I'll draw it here for everybody. Okay. Ma'am, can you give example of off-page connector? Example of off-page connector. Suppose my problem doesn't finish here. Okay. And these lines have to be there. I need another page. Maybe I need another board here. Or you have to turn your page. Then you can give off-page connector there. Okay. When I reach the end of this part, I don't have any more space to write here. Okay, then I'll use off-page connector that I'm continuing it to next screen. Is it okay? Okay, ma'am. Now you try it for finding the largest of three numbers. I will draw it here. I'm waiting. 2 minutes. You tell me what to draw. मैम बन गया. हो गया? Yes, ma'am. Okay. Now tell me what should I write here? Ma'am, input ABC. Okay. How? And parallelogram. In parallelogram. Okay. Then ma'am, rhombus. Decision. A decision making symbol. Decision making. Okay. Yes, ma'am. Is A is greater than B. A greater than B. If A A greater than B? B. Yes. Then Ma'am, two arrows, one with yes, Fine. one with no. No. okay. Is the board still visible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes and no. Now tell me what again? Ma'am, again decision box. Yes, flow line. We can make another decision. Which line should I? Under yes. Yes, Yeah. ma'am. What? Both. Yes, ma'am. Yes. What it should be? First, let us try with yes. If A is greater than C is greater than C. Greater than C. Another decision box. Yes, A ma'am. greater than Okay. If A is greater than C. Greater than C. A greater than C. Then what? Yes, no again.
Yes, ma'am. Yes. Now, For the yes flow line, we can we cannot write one at a time. If A greater than C, in yes, then what should I do? use a parallelogram and write A is In the largest. parallelogram, right? Display is the Okay, A is largest largest. Yeah. in Yes, parallel. ma'am. What type of representation? Which box? Parallelogram. Parallelogram. Okay. What about this no? This no? Ma'am, C is largest. C is greatest. C is largest. C is Yeah. largest. A parallelogram reading C is largest. Under this portion, right? Under this no? Yes. No, it is not visible now. Right on the next slide. This one. C is largest. Okay. What about this no? Again, B decision greater box. than For another decision box checking B greater than C. Okay. If B is greater than B C. B greater is than greater C. than okay. C. Yes. No. And no. Tell me. What about yes? Largest. An output message reading B is largest. Yeah. C is, there will be a box will be displayed as the largest. B is largest. Display B. Display B. Yes, ma'am. And What in kind of no, box? Parallelogram. parallelogram. Leave this no parallelogram. What about this no? Display C as the largest. C C is is largest. largest. That arrow. In a parallelogram box. Okay. Is it over? No, ma'am. Then what And is this? stop box. Flow line and end. Parallelogram is stop. Flow line? Maybe here I'll give stop. Okay. Everybody got this flowchart? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. कोई doubts? No, ma'am. पक्का? किसी को भी कोई doubts तो नहीं है? No, ma'am. Can we move ahead? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, where is stop? Where is? Stop. Stop. स्टॉप बहुत नीचे है आपको बस ये करना है कि जहां पे भी आपने सी इज लार्जेस्ट ए इज लार्जेस्ट जहां पे आपने एंड किया है एक लाइन कॉमन लाइन बना के आपको स्टॉप कर देना है हेलो हाँ मैम का नोट नहीं किया मैं अपना किस बेस बनाया एक ही स्टॉप बनाना है जैसे एक ही स्टार्ट है वैसे एक ही स्टॉप बनाना है राइट Can we move ahead? Yes, ma'am. वो सिंपल पर्पस में भेज Okay. So now that we are aware of flowchart algorithm, we can start with C program. Let me tell you how does it work first.
किसी को कोई डाउट्स नहीं तो प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को। म्यूट करो अपने आप को। Lakhan, please mute yourself. Okay. Have you noted down the speaker? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. See, Ma'am, 1 whenever second. you write it, yes, whenever you write a C program, what happens? These are the phases which is to be followed. Okay, you don't see it, but this is how it goes. It might be asked in your Viva or in some interviews. How does it go? You have your source file. Source file means your C code. Suppose your C program file name is first. You save it using .c extension. This is the file name first. .c, that means that is your source code. Okay, it goes to the compiler. Compiler, what it does? It checks whether there are any kind of errors here in your source code. Okay, if not, then it creates an object file. Okay, with the same name first .obj. Obj is object file. Okay, this is not executable. This file is not executable. You don't see it. Then once the object file is created, there's a linker. Okay, this is a module. These are all modules implemented already in your compiler. Okay, linker. Now linker, what it does? It uses some library functions. Library functions means some standard functions. Standard functions which are already defined. You don't have to define it. Okay, there are certain functions which we will be using frequently, but those functions are defined under this library functions. It links, these library functions is linked to the linker. The linker, what it does, it links this object file with the library functions, then it sends it to the loader. Now, what is the purpose of loader? Now, when it comes to loader, it becomes an executable file, goes for execution. The loader loads the source file, whatever you have written, into the RAM, tells the CPU what is to be done. Okay, and the CPU starts processing your code. Okay, that is execution. Is it clear? Priyanka will be sharing the attendance list at the end of the class. Okay, we'll be sharing the attendance list at the end of the class. You can give your attendance then. Is it clear till here? मैम Yes. Follow? मैम लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आपका प्रोग्राम कहाँ से कहाँ तक पहुंच रहा है। आपने तो यही लिखा था सिर्फ first.c या मे बी योर प्रोग्राम नेम.c। ये पहले ऑब्जेक्ट फाइल में ट्रांसफर होता है, फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल में ट्रांसफर होता है। यस मैम ऑब्जेक्ट फाइल क्या होता है? ऑब्जेक्ट फाइल ये हमने लिखा जो नॉर्मल सी कोड में, ऑब्जेक्ट फाइल में इसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर कर देते हैं।
क्योंकि हमारा कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज ही समझता है, ये तो उसे समझ में नहीं आ रहा ना कि हम क्या लिख रहे हैं, जब तक वो जीरोस एंड वंस में नहीं समझे। यही कॉन्सेप्ट है ना, zeros and ones में anything you give to the computer, it transforms it into zeros and ones, then only it starts its processing. So object file is that base. मैम सीपीयू लोडर में काम करता है कि एग्जीक्यूशन में मैम? लोडर में फाइल रैम को देता है। बस उतना ही काम रहता है मैम उसका? यस, लोडर सीपीयू को, लोडर जो आपने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा वो रैम तक पहुंचाता है। कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में जाने के लिए आपको रैम की जरूरत होती है। ओके, रैम मेमोरी की जरूरत होती है। कभी भी आप कुछ भी, अगर आप एक पेज भी ब्राउज कर रहे हो तो आप जब क्लिक करते हो अपने सिस्टम में तो वो रैम से ही खुलता है। अगर आपका रैम कम है तो वो बहुत सारे ब्राउजर्स, बहुत सारे विंडोज नहीं खोल सकता। तो ये वाला लोडर क्या काम करता है, आपके फाइल को रैम में लोड कर देता है। लोड करने के बाद इट गोज फॉर एग्जीक्यूशन। And ma'am, what is library functions? Library functions are some standard predefined functions. ठीक है, I will tell you what are those predefined functions. For example, for time being, you can think printf, scanf. These are all library functions. जिसे थोड़ा आइडिया है इन सब चीजों का, they must be aware. If not, we will discuss it. Okay, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट्स? Yes. No, ma'am. No, ma'am. बस आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। फर्स्ट डॉट सी से ऑब्जेक्ट फाइल बन रहा है, फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल बन रहा है। ओके, now let's start with C. Under the C, before writing any code, you should be aware of few things. Identifiers, okay. Under C program, before starting with any C code, you should be aware of identifiers. More or less strings, constants, we'll see. These also come under identifiers. How? Let us look at that. Firstly, we'll start with identifiers. Okay. There are certain rules to write identifiers. Okay. You may take down the rules. An identifier can just begin with a letter or an underscore. Okay. It should not contain any white space while you name the identifiers. Should not be a keyword. I'll tell you what is a keyword, but an identifier cannot be a keyword. And lastly, it can contain only
letters, digits, or underscore. Okay, that means no special characters are allowed. Okay. Is this line still visible? Last line? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And it should be at most 31 characters. If at all it is bigger than this, 32 characters, you cannot see that. Okay, those are insignificant. So firstly, it can begin only with a letter or underscore. Okay, if I write maybe an identifier as underscore A12, is it valid? See the rules. It can begin either with a letter. Yes, ma'am. Valid. Yes, ma'am. Valid? Okay. Yes, ma'am. Suppose I write now A.23. Is it valid? No, ma'am. 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 Special characters are not allowed. Yes. This dot is not allowed. Except underscore, nothing is allowed. Okay. Now should not be a keyword. I'll tell you what is a keyword. You're done with identifiers? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. I'll tell you what is a keyword. Keyword are nothing but reserved words. Okay, that means these are reserved for the compiler usage. Whenever you code any C program, there are few reserved words already kept. Okay, you cannot use those words for any other purpose. You can just use those words in the context they are defined. मतलब जिस purpose के लिए keywords define किया है programmer ने, उसी purpose के लिए हम use कर सकते हैं. So suppose I say char. They are basically 32 keywords in C. Okay, 32 keywords are there in C. These are reserved words, you cannot use them. Char, case, const, break. Like this, there are 32 keywords. इनका जो function है, ये already defined है, predefined functions है, you cannot use them. So if I want to declare something like this, case, apart from this keywords, like I was declaring identifier, can I use this? No. Why? Because it is already a keyword. ठीक है? कोई doubts? No. No, ma'am. Yes, कोई doubts? No, ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Now let's look at variables. Variables. We'll talk about constants later. When I say variables, that means आपको पता चल गया मेमोरी का एक स्ट्रक्चर है इस टाइप का. Okay. So why do we use variables? I was supposed to add a equal to 3, b equal to 4. Okay. These were called variables. ये variables क्यों use होते हैं? When I am using certain data, जिसे मैं access करने के लिए, easily access करने के लिए ये variables का नाम दे रही हूँ. Fine. These are variables. How do I access them? When I say A, I reserve a slot here in memory. Fine. Maybe here. B. ठीक है. This is where I use variables. Is it clear? Is it clear? Where do I use variables? Yes.
Yes, ma'am. Okay, whenever you are supposed to do something with your data, you use variables for easily accessing the data. Okay, clear. Next, we'll move to data types. See, whenever I say data types, that means the type of data. Okay, type of data means I will define what kind of data I am using in my code. Suppose I was using, I need this much amount of space. Okay, it's no point wasting this whole space, right? Suppose I want to drink water. It's no point taking the water in the bucket. समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट डेटा टाइप का? Yes, ma'am. अगर मुझे पानी पीना है तो मैं बकेट में तो पानी लेके नहीं पीऊंगी, बाल्टी में लेके पीऊंगी क्या? It's just wastage of पानी. I'll use a glass. कि मुझे इतने पानी की जरूरत है, so I will use a glass and I will take water. Right? Same is the concept with data type. Whenever I give a type to data, that means I say that this is my usage, this much amount of memory I need to store my variable or to work with my variable. I need just this much amount of memory. Okay. Is it clear? Please repeat once more. There was Okay. network issue, that's all. ठीक है. अगर मुझे suppose पानी पीना है तो मैं पानी किस में पीऊंगी? ग्लास में पीऊंगी, बॉटल में पीऊंगी? जनरली मैं ग्लास में ही पीऊंगी, एक बार में एक बॉटल नहीं पीऊंगी. बाल्टी में तो पानी लेके नहीं पीऊंगी ना मैं. क्यों नहीं पीऊंगी? Because that is wastage of water. Similarly, अगर मुझे इतनी स्पेस की ही जरूरत है, अगर मुझे सिस्टम में मेमोरी में इतनी स्पेस की ही जरूरत है, तो I will not reserve the whole space or I will not use the whole memory for this variable. I'll just ask कि मुझे इतनी स्पेस की जरूरत है, आप मुझे इतना स्पेस दे दो. Fine. So that is data type. When I give a type to data, that means I specify the need, my need, how much memory I need for my data. Is it okay? Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. Fine. So when I say data, there are two types: primary and derived. Okay, primary, derived, and one more is there, but that is not much relevant. User defined is also there. Okay. When I say primary, that means these are just the very basic data types, which is int. Int is integer, char, character. I will tell you what are these. Just note down what are those. Float and double. Okay. These are primary data types. Int, character, float, and double. I will tell you what are these used for. Okay. Under derived, we have array, structure, union. Okay, these are derived data types. We will discuss everything in detail. Don't worry, we will be discussing. Then under user defined, you don't need this much, but just be aware you have type depth and enumerated. Okay, you
just have to know the names of these. We'll be talking about all these separately. यहाँ तक आपने नोट कर लिया? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now let's start with the primary types. I'll give you a chart. You just note down this chart. I will tell you why. मैम लास्ट 20 मिनट से स्क्रीन में कुछ मेरा शो नहीं कर रहा है, कोई मतलब सॉल्यूशन है इसका? आपकी स्क्रीन में कुछ शो नहीं कर रहा है? हाँ मैम, खाली मतलब आपकी ऑडियो आती है। आपका इंटरनेट भाई फ्लाइट मोड मार के एक बार रिफ्रेश कर लो इंटरनेट। इंटरनेट फुल स्पीड है। आपका इंटरनेट डाउन चल रहा है? नो मैम, इंटरनेट का स्पीड तो अच्छा दे रहा है। बाकी सब अब लो तो फोन में प्रॉब्लम होगा भाई, फोन का प्रॉब्लम होगा फिर। नहीं इनकमिंग सब वीडियो ऑफ है। फिर से रिजॉइन करो। ओ इनकमिंग वीडियो ऑफ है। ओ भाई भाई अच्छा, वो इनकमिंग गलती वीडियो ऑफ है। चल कोई ना, मिस्टेक हो गया। दिख रहा है? हम लोग को तो दिख रहा है मैम। Okay. यस मैम। सबको दिखने लगा? सबको दिख रहा है? बहुत अच्छे से। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम Okay. दिख रहा है। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज मुझे स्टॉप करके बताना क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? अगर नहीं दिख रहा है, वीडियो लैग कर रहा है तो प्लीज बताना। श्योर मैम, श्योर। So let's start with data type. I said it tells me how much space do I need in the memory. So I said int, which is nothing but integer. This is integer. But how do you name it? Int. This is the keyword. Okay. Int is integer. The size it takes is 2 bytes. Fine. Is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So 2 bytes. What is 1 byte equal to how many bits? 8 bits। 8। Yes. 8 bits. 2 into 8. यानी कि इसमें 16 bits हो सकते हैं। Clear? ठीक है? Fine? Yes, ma'am. यस मैम। अब रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब इसको हम 2 to the power 16 करेंगे तो इसका रेंज मिलेगा। फाइन। 2 to the power 16 is nothing but 65,536. Okay. Why 2 to the power 16? I said you have 16 bits for int. ठीक है? 2 bytes यानी कि 16 bits. 16 ये 2 क्यों? Because bit is nothing but 0 and 1. दो रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। So 2 to the power 16. Clear? ठीक है? कोई डाउट्स? No, ma'am. कोई डाउट्स है या नहीं है? नहीं मैम। नहीं है? ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे देखो, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट साइन। ठीक है? साइन तो कुछ भी नहीं बोला मैंने। तो ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो इसको क्या करेंगे हम? इसको हम पहले तो डिवाइड कर देंगे 0 के ऊपर, यानी कि इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे 65,536 को। ओके, सो इट बिकम्स minus 32,768 to plus 32,767. Okay, your range. Just divide this, you'll get this value.
एंड ये लास्ट तक क्यों नहीं किया? बिकॉज आई एम इंक्लूडिंग जीरो. ठीक है, ये आपको बस मैंने टेक्निक बताया है क्यों रेंज ऐसा आ रहा है. ओके, इज इट ओके? एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर इज परसेंट d. Tell you what is format specifier. Whenever suppose I write int a variable a equal to 12, ठीक है, तो अगर मुझे 12 को डिस्प्ले करना है, I will take the help of format specifier परसेंट d. ओके, यहाँ तक क्लियर है? You are supposed to know this range. It is 2 bytes, it is this much range. If it is just int, okay. Another variation. मैम ये रेंज क्या है मैम? रेंज मतलब ऐसा तो नहीं है, सपोज मैंने इतना स्पेस अलॉट कर दिया, ठीक है, इनिशियली सपोज मैंने 12 अलॉट कर दिया, तो ये इतना स्पेस इस रेंज के अंदर है, ये आ गया. सपोज मैंने मे बी 60,000 मुझे इंटीजर में डालना था, लेकिन ये तो इस रेंज पे है ही नहीं. इस 60,000 is in between this range? No, it will go out of range. इसलिए ये रेंज डिफाइन किया गया है. ठीक है, क्लियर? ठीक है मैम. क्लियर है? ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, if I say unsigned, unsigned in. Okay, unsigned in means here I will take just the positive values. Okay, just the positive values means माइनस के कोई टर्म्स नहीं हो सकते हमारे पास. तो व्हाट वाज द रेंज? 2 to the power 65,536. ये था रेंज. 2 बाइट्स से मिल गया है तो ठीक है. माइनस के रेंज नहीं हो सकते क्योंकि अनसाइंड है ये. तो 0 to 65,535. 0 से है, इससे 535 तक आएगा. Okay, and for the format specifier it is percent %u. Here, next, char. Char is character. Okay, size will be 1 byte. Okay, so what do you think will be the range? Calculate it. कैलकुलेट करो रेंज. 1 बाइट यानी कि 2 पर 8. क्या होगा रेंज? minus 256 to 251. Wait. Yes, it is 256. I'm not giving any sign, so it can include both positive and negative. So इसको डिवाइड करना होगा. ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंक्लूड करना है तो आपको ऐसा होगा ना, आपका नंबर रेंज 0 से स्टार्ट होके दोनों तरफ ही जाएगा. माइनस और प्लस दोनों आपको इंक्लूड करना है, इसीलिए मैंने इसको 2 से डिवाइड किया है. मैम कैरेक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव होने का क्या मतलब है? क्या कैरेक्टर को? मैम कैरेक्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव होने का क्या मतलब है? ओके, ये आपको मैं एक प्रोग्राम के साथ थोड़ी देर बाद समझाती हूँ. ठीक है, ये मतलब जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो आई विल टेल यू कहाँ पे ये जरूरत पड़ता है. ओके, सो आप यहाँ पे मुझे रेंज बता दो क्या आएगा. -128 से 127. माइनस 128 minus 128 to 127. 120. 7. Yes, minus 128 to plus 127 and the format specifier is percent %c. ठीक है, अगर मैंने इसको अनसाइंड कैर कर दिया
तो क्या होगा, ये फिर से 1 बाइट होगा। अब इसका रेंज बताओ क्या होगा, अनसेट, माइनस वैल्यू नहीं आ सकते, 0 to तो 2. 0 to 0 256. to 0 to 255. 255. yes 56 तक नहीं जाएगा because I'm starting with 0. Okay, fine. Next, यहाँ लिख सकती हूँ मैं, is it visible, float, is it visible? Yes, ma'am. Yes. Okay, मैम फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा? okay, this is also percent C, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। Float size is 4 bytes, 4 bytes यानी कि 2 to the power 32, which is a very big number. So nobody asked you the range of float, but still if you want to know, it is minus 3.4 e to the power plus 38 to plus 3.4 e to the power minus 37. Okay, you don't have to memorize this. This is given in Mantissa exponent format. Okay, nobody is going to ask you this. And the format specifier is percent F. Okay, यहाँ तक ठीक है? Yes, ma'am. तो फ्लोट के बाद डबल होता है। ओके, डबल 8 बाइट्स लेता है एंड उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट LD। ओके, और एक होता है लॉन्ग डबल, दिस इज 10 बाइट्स। लॉन्ग डबल का 10 बाइट्स होता है साइज एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर ये होता है, ठीक है? मैम लॉन्ग डबल का 10 होता है या 16? इसका लॉन्ग डबल का ये साइज 10 बाइट होता है या 16 बाइट? देखो, ये कहीं पे 10 बाइट्स होता है, कहीं पे 16 बाइट्स होता है, बट आई हैव जनरलाइज्ड इट क्योंकि मैंने इंटीजर का साइज यहाँ पे 2 बाइट्स दिया था, कहीं पे वो 4 बाइट्स भी होता है, तो मैंने उस कॉन्सेप्ट को लेके 16 बिट और 32 बिट मशीन में ये 10 बाइट्स होता है, ठीक है? ये वैरी करता है, लेकिन 10 भी होता है, 12 भी होता है। जैसे इंटीजर का साइज मैंने आपसे बताया कि इन 2 बाइट्स है, लेकिन आप कभी-कभी कोई मशीन में आप रन करके देखोगे तो ये 4 बाइट्स भी देगा। तो ये डिपेंडिंग ऑन द मशीन, we usually, if nothing is given, we assume it to be 2 bytes, but if they mention that my system's configuration is such and such that it takes integer as 4 bytes, so we'll go for this. Is it okay? Yes, ma'am. यहाँ तक आपको क्लियर है? Yes, ma'am. अब मैं बताती हूँ इन सबका यूजेज क्या है। When I say int A, int data type A is a variable 10. What am I doing? When I say this is called variable. If I write just this way, this is called variable declaration. And if I write A equal to 10, that means variable initialization. Okay. So when I say this, int A equal to 10, I am reserving the space for A as 2 bytes. Fine. And if I have to display
I will write print f format specifier a. Okay. Okay, we'll talk about printf later on. Maybe when we see our first code. Int a equal to 10, 2 bytes. यहाँ पे reserve करके 10 हो गया. Fine. If I say float b equal to 10.34. Float is used to represent decimal number systems. ठीक है. So float b means 4 bytes is reserved. 10.34. This is b. Okay. Is it okay? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So when I say float, it will give me the precision up to 6 digits. 6 digits of precision after decimal point. Float. Fine. Is it okay? If I say double means obviously it takes more bytes, 8 bytes. So what will it increase? The precision value will increase. Okay. Is it okay? So suppose I say now character. When I say char C, I reserve how much bytes here for C? Char C. 1 byte. 1. It is just 1 byte. So this is how you declare it. If you declare a single character, it should be within single quotes. Okay, I will tell you the declaration. It should be within single quotes. Fine. Is it okay? Okay. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. क्या? Yes, ma'am. Okay. मुझे आवाज नहीं आ रही है. आवाज नहीं आ रही आपकी. कहाँ कहानी पढ़ रहा है? क्लास चल रहा है. अच्छा. यहाँ तक सबको समझ में आया है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Can we move to the next topic? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So let us start with our first four. Okay. Your first C program. ये कॉपी हो गया आप सबका? Yes, ma'am. Okay. So whenever you start coding your program, जब भी आप start, yes, कोई कुछ बोल रहे हैं? दिख रहा है आपको?
Yes, ma'am. जब भी आप start करते हो, we start with this line hash include stdio.h. इससे पहले आप एक comment line दे सकते हो, which will tell you what is the program all about. Maybe printf welcome to C programming world. What is the problem with? ये comment line statement बोलते हैं इसे. Okay. / asterisk displaying a message. This is what the program is doing. Okay. Hash include, there are no spaces. Mind you, there are no spaces between hash include stdio.h. This is less than sign. Within this, you write stdio.h. Some of you must be already aware of what is this. This is known as, this line is known as preprocessor directive. Okay. Is there a video lag? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत लैग कर रहा है. अभी ठीक है? No, ma'am. दिख रहा है आपको? यस मैम अब ठीक है मैम दिख रहा है. This is the first line of my program. Hash include stdio.h. What is this called as? This line is called as preprocessor directive. Okay. What does it mean? It is directing something. It is directing the processor. Okay. That is why the name is preprocessor directive. What it is directing? This. To include this. What is this? This is a file. I was talking under linker, you were asking what are library functions? This is a library function. stdio.h is nothing but standard input output. Okay. STD means standard input output. Fine. And .h is, this is header. Extension of this file is H because this is the header file. Is it okay? Yes, ma'am. Okay. Then main. Either you can write int main. This is completely optional for time being. Okay. That is why I did not write int. Okay. I just give main. Main is the backbone of any C program. That means without a main function, you will not be able to execute your C code. Okay. Whatever processing you are supposed to do in a C code, it should be written within main function. Doesn't matter if you want to add the function, you want to add two numbers, you want to display two numbers, anything, it should be under the main function. Right. This is a function called, the function name is main, and with this brackets indicates it is a function. Okay. And this main, since it is already defined within the program, within the compiler, within the C compiler you will be using, so this becomes a reserved word. That is a keyword. Main is a keyword. Okay. So when you define a main function, you are seeing the compiler that there is some processing needs to be done. So under this processing part, whatever you do inside the main function, that should be within these curly braces. Okay. So this defines the body of the main function. Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Video, audio, everything okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So under this main function, whatever processing you will be doing under this curly braces. That means this is the function body. This is called as the function body. Okay. Now, my task was to display a message. Okay. Now, this printf. Whenever you use a C program, we use this syntax, this function, printf.
This is also standard library function. Okay, I'm not using print. I'm using printf. No spaces. This is a standard library function. And how does the compiler know that I'm asking something to be printed? Because of this. I have included this file here, which tells me what are the standard input and output functions. Okay, this is an output function printf. I need something to be displayed to the screen or the console. Whatever we call the screen, when you run it, we call it console. Okay, printf is a standard library function. Where is it defined? Under this file, header file, stdio.h. printf stdio.h के अंदर defined है. उसका purpose क्या है? It will display this message. What is the syntax of this message? This brackets. Again, printf is a function. How do you write a function? Brackets. Brackets के अंदर you give what is to be done. Printf brackets. Within these brackets, what am I doing? Within quotes. Whatever you want the message to be displayed, it should be within quotes. I am writing welcome to C programming world. You can write anything, your name, your roll number, anything, but it should be within double quotes. And it should end with a semicolon. Every line in C ends with a semicolon. Without this, if you don't give a line here, if you don't give a semicolon here, you will get an error message. Okay. Is it okay? ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आवाज नहीं आई, फिर से पूछो. What is header file? मतलब Okay, header header- मतलब होता क्या है actually? हाँ, header file. Header होता क्या? Yes, ma'am. Remember that point. लिंकर वाला. अभी इससे पहले जो मैंने फिगर बनाया था, Yes, ma'am. ये library functions थे. I said I will talk about library functions later. Yes, ma'am. Library functions में printf आता है. ठीक है? printf is a library function. क्यों ये library function है? क्योंकि ये एक library sort of thing है. ठीक है? Header file is nothing but a library kind of thing. Library में क्या होता है? Books होते हैं. वैसे ही इस header file में बहुत सारे library functions होते हैं. Suppose ये एक header file है. Suppose ये stdio.h, stdio header file. ठीक है? इसके अंदर कुछ functions define है. जैसे इसके अंदर printf define है. scanf define है. ठीक है? तो ये सारे functions को अगर हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, कहीं पे भी यूज कर रहे हैं, तो हमें ये वाला फाइल का हेल्प लेना पड़ेगा कि ये फंक्शन कर क्या रहा. तो ये फंक्शन का पर्पस क्या है वो हमें कैसे पता चलेगा? जब तक अगर हम हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करते हैं तो ये एरर दे देगा. ठीक है? Yes, ma'am. कोई डाउट? Thank you, ma'am. No, ma'am. ऐसे ही और हेडर फाइल्स भी होते हैं, folio.h और भी बहुत सारे होते हैं. ठीक है? आई विल टेल यू अबाउट folio.h. यहाँ पे आप देखोगे जैसे अगर आप टर्बो स्कीम में काम करोगे तो आप यहाँ पे रिटर्न दोगे, रिटर्न 0. ठीक है? ये आप रिटर्न 0 क्यों दे रहे हो? अगर आप नहीं देते हो तो भी ये चलेगा, ये लेकिन ये टर्बो सी में मैंडेटरी. टर्बो सी एक कंपाइलर है जिसमें आप कोडिंग करोगे, आप अपने लैब प्रोग्राम्स वहीं पर करोगे. ठीक है? आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. आई विल टेल यू व्हाट टू डू अबाउट इट. रिटर्न 0 आप देते हो कि अगर आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर गया. ठीक है? आपने ये कोड लिखा सी प्रोग्रामिंग में .c करके आपने एक्सटेंशन के साथ सेव किया, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हुआ, एग्जीक्यूशन हुआ. जब आपको स्क्रीन में ये डिस्प्ले हो गया, यानी कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, तो रिटर्न 0 यानी कि सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन. ओके. कभी-कभी क्या होता है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होता है. सपोज यहाँ पे मैंने ये मिस कर दिया, सेमीकोलन मिस कर दिया. मैंने despite of me giving return 0, it will not execute. Why? Because there was an error here. The semicolon termination was missing. So it will give unsuccessful execution. You have to recheck your code. Is it clear? Yes, ma'am.
कोई डाउट्स? कोई भी डाउट्स? मैम इस वाले फंक्शन में रिटर्न का क्या काम है? इस वाले फंक्शन में रिटर्न मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप दोगे तो मतलब यू आर टेलिंग द कंपाइलर दैट अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नो एरर इन द प्रोग्राम, आई वांट अ सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। ठीक है, ओके मैम। कैन वी मूव अहेड? मैम अगर रिटर्न 0 कर रहे हैं तो मेन के पहले इंट लगाना नेसेसरी है या फिर छोड़ सकते हैं? इसके पहले अगर आप रिटर्न कर रहे हैं तो इसके पहले आपको इंट लगाना नेसेसरी है। अगर आपने रिटर्न 0 दिया है, मतलब आप मेन फंक्शन से कुछ भी अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो उसके पहले आपको मेन के पहले आपको इंट लगाना होगा। एंड मैम अगर कुछ नहीं लगा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक वॉइड लेता है बाय डिफॉल्ट। When we will talk about functions, maybe that time we'll discuss इसका पर्पस क्या है, इंट का पर्पस क्या है, वॉइड का फंक्शन पर्पस क्या है, रिटर्न का फंक्शन पर्पस क्या है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अभी तक भी लोग आ ही रहे हैं, मैं सबको अलाउ कर रही हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम से नहीं करूंगी। डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर से रिज्वाइन करते हैं तो दिक्कत प्रॉब्लम हो जाती है। डिस्कनेक्ट हो गया। किसी को कोई डाउट्स है? So next look at errors. So when you debug a program, debug means you compile a program. The first phase was compilation. Compilation means you look for errors. Okay. So that is debugging. When you debug a program, you get two types of errors. You might get syntax error or semantics error. Okay. Clear है? जब आप कंपाइलर प्रोग्राम देते हो डिबगिंग के लिए, is there a problem? It might return a syntax error or a semantic error. Syntax error means anything related to formatting. Formatting जैसे आपका अगर सेमीकोलन मिसप्लेस्ड है या मे बी आपने मेन के बाद ये ब्रैकेट्स नहीं किया है या ये ब्रैकेट्स नहीं किया है, these all come under syntax error. Syntax means just the format. Okay. And semantic means meaning. Okay, is there a problem with your making the compiler understand what to do? Then there results a semantic error. Is it okay? यस मैम। हाँ You might not get what is semantic error. Let me give you an example. Suppose I say see, I'm talking about semantic error now. That means there's a problem with the parser or the compiler understanding what you're trying to say. Meaning is not clear. Okay. Look at the first sentence. Mr. X, anybody whose name is X is right. मतलब Mr. X सही है. Okay.
सेकेंड सेंटेंस क्या है? मेक अ राइट टर्न फ्रॉम 10 meters ahead. Look at this word. राइट इस कॉन्टेक्स्ट में ये अलग सेंस में यूज हो रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये अलग सेंस में यूज हो रहा है. ओके, सो यू हैव टू बी unambiguous, means you have to tell the compiler what it is trying to say. Okay, whether it should work in this way, it should take the sentence as this, or it should take the sentence as this. Is it okay? Yes, ma'am. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. Shall we continue or should we stop? Ma'am, stop. Ma'am, It is enough for today. Stop. Stop, ma'am. भूख लग गया. भूख लग गया. Ma'am, मैम data समर खत्म हो वेकेशन रहा में क्लास होगा. Yes, CRs, please send the attendance links. Ma'am, In the Agarwal chat. sir told that Aditya of electrical branch would be sharing the attendance link for all the branches. Pardon, I did not get you. What? मैम अग्रवाल सर बोले कि आदित्य इलेक्ट्रिकल ब्रांच से अटेंडेंस लिंक शेयर करेगा और ऑल द ब्रांचेस हैव टू मेक देयर अटेंडेंस ऑन द सेम लिंक. Yes, yes, yes. That is why I'm asking him to share the link. यस मैम आदित्य. Yes, ma'am. Sharing. Ma'am, अभी तक- classes. Yes, what? Ma'am, classes generally 2 घंटे के होते हैं ना. नहीं, मतलब अगर आप 1 घंटे का क्लास लोगे तो देखो अभी आप अभी स्टिल लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब 1 घंटे का क्लास लेने में सबको ज्वाइन कराते कराते टाइम अप हो जाएगा. इसीलिए मतलब अगर 2 घंटे का क्लास लेते हैं तो थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग, इसीलिए Ma'am, second they half. are joining because they are in the lieu of taking attendance, ma'am. Not in Yes, the I taking. understand that. लेकिन मुझे डिस्टर्ब ना हो इसीलिए मैं 2 घंटे का क्लास की मतलब थोड़ा कंटेंट ही. आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है 2 घंटे का क्लास में? No, ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. कभी 2 घंटे कभी 1.5 घंटे ऐसे ही क्लास चलेंगे. ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है मैम. आप लोग लिंक शेयर कर लो. लिंक शेयर हुआ क्या? Ma'am, I have shared the link in chat. Okay, okay. You all please fill the form. Please fill the attendance list. और अगर कोई डाउट्स हो तो आप नेक्स्ट क्लास मुझसे डिस्कस कर सकते हो और आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है. क्लास कब होगा हम लोग क्लास के बारे में अनाउंस कर देंगे आपको आपके रिस्पेक्टिव गूगल क्लासरूम्स में. ठीक है, हमेशा मतलब जनरली ये सेकंड हाफ होगा या फिर संडेज को हो सकता है, लेकिन हम डिस्कस कर देंगे. एक दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर देंगे. Okay ma'am, no problem. Where is the chat box? टॉप में देखो भाई, टॉप में स्क्रीन टच करो. ऊपर में. फोन होगा तो लेफ्ट. हम लोग बैठ का सेक्शन क्या है ब्रो? बी. कौन सा इलेक्ट्रिकल का? हम लोग का एच है. एफ. हम लोग का इलेक्ट्रिकल का क्या है? सिविल का भी. अरे चैट बॉक्स तो मिल ही नहीं रहा. चैट बॉक्स नहीं मिल रहा कहाँ है? ना अरे लॉगिन नहीं किया होगा. देखो ना राइट टॉप कॉर्नर पे. भाई यार भाई ऊपर में. लॉगिन करना कंपलसरी है क्या उसके लिए? व्हाट्सएप में शेयर करो ना यार. व्हाट्सएप पर कर दो. व्हाट्सएप को हाँ, सिविल वालों हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहे हैं. रुको, सिविल का हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहे हैं. भेज दिया ऑलरेडी.